So we're off, and the match has gotten underway. We're in the second over already. The game between midlife Avengers, who are batting right now. Currently, the score 2 runs for the loss of 1 wicket. Just trying to take a single there. That's going to be another single. So another run added to the board now. They're trying to find their footing in the match here, the midlife Avengers. 3 runs on the board. Final ball to go in this over. Second over here. This is the power play, of course. And that's going to be a dot ball. So 3 runs to end 2 overs. A slow start comparatively for Midnight Avengers. But maybe they're trying to find their footing, just trying to see how they can, build a partnership together. Satya and Devesh Tahilani on the crease right now. Now in the attack. Tries to swing to that bowler. Did he get a nick there? There's a shout to the umpire, but no dice this time. So that's going to be a dot ball. There was a good shout there. But the umpire not interested. You see the replay here? There's a huge shout there you can see in the replay here. Now just adjusting the fielding once again. Akshesh Trivedi, the bowler now. It's going to be his second over. He's already bowled one. He was the one who started the first over, the innings right here. And, well, very good bowling so far. Now, he's in the attack again. Slower ball maybe this time into the gap. There's a fielder there at cover. And, well, it goes beyond him, but the fielder in the deep just making sure it stops at a single. So, another single comes up. Satya now facing the bowler. Satya currently at 0 runs in 7 deliveries. He needs to step up to the ball this time. This is T20 after all. Now in the attack. Well struck, very well struck. The fielding there, really good. And there was cover at square as well. And just making sure that it stopped at a single. Could have easily gone for 4. The boundaries are short on this side, if you can see. Really good over so far for Akshesh Trivedi. Just a few singles. He'll be happy with that. Power play overs, singles, well, that's good enough, isn't it? Now in the attack once again. Good ball, and the swing and a miss. Oh, that was close. That's given. That's given. You heard a knock there, and well, the umpire heard it too. And that is wicket number 2. So, 5 for 2 in the third over. And maybe some trouble for the midlife Avengers. Two wickets already. Just 5 runs on the board. Well, what a start this is
Really, really good start for the mid-age worries. Now, once again, so 5 for 2. Akshesh Trivedi in the attack again, just waiting for Pankaj Asrani to take the crease. Satya on the other hand, just a single so far. He's seen two batsmen go off already. 5 for 2 so far now. Akshesh Trivedi in the attack again. Really good bowling so far. And now facing Pankaj. That's in the air. The fielder getting underneath it. And oh, almost took it. That was almost a third wicket. And just lucky there in the end. Two fielders converging. And I think that just disturbed his vision for a little bit. And that was close. That was really close, wasn't it? That's a lifeline for Pankaj Asrani. Now again in the attack. 6 for 2. We're in the third over. Final ball. And that's another swing and a miss. And that's going to be the end of the third over. So 6 runs for 2 wickets at the end of 3 overs. The midlife Avengers slightly in crisis, maybe. They need to buck something up. But of course, players here are not your regular pros. They're playing for fun. They're trying to revive the spirit of the cricket. And well, this they practiced in their own way. But just need to see if they can score up some runs. Maybe something close to 150 would be a decent score here. We've seen scores upwards of 250s as well on this pitch, but this is a completely different situation and a different condition here. Currently, well, they need to up the scoring rate. Really good ball, a huge shout, but just gets a nick in the end, and that's going to be a single again. So the singles are coming, the runs are racking up for the midlife Avengers, but they need some boundaries, don't they? Especially in the power play. Just dislodge the bails there, so they'll have to reset the stumps. So now, once again, Ram on the attack. Second over for him as well. Remember, he took the wicket in that over earlier. Well, almost another one. Really good bowling so far by Ram. It's not often you give a spin bowler the opportunity to bowl in the power play unless you really trust them and they're really good at their job. And Ram has proven that to be true so far. And that's a swing and a miss, but I think height would be an issue there. Got him on the thigh rather than the pad, and that's why it's going to be another dot ball. Once again now. On strike, Satya. 1 run from 11 balls. Tries to swing, and once again, swing and a miss.
Now, wider ball, and again, Satya not being able to get the right connection. Not the best connection, not what he needs right now. He needs a couple of more runs. Now, once again, that's a wide. That'll be a wide ball, welcomed by the Midlife Avengers. They're going to be happy with that. But overall, really good bowling by Ram. He's read the play very well. He's bowling it slightly wide to Satya. Satya seems to be struggling a little bit, maybe. And now, this time he responds in kind, finds his groove with a brilliant connection, and that's a maximum. That is a brilliant six, and it's almost like Satya heard us talking, and he's like, wait, let me just show you what I can do. Brilliantly opened the face of the bat there, and a brilliant six towards square. So that takes them up to 14 now. A really important six. And that's the end of the over. So 14 for 2 after 4 overs. Now, once again, fifth over in front of us. Still the power play, of course. And who's going to get the responsibility? Ishan Khan, given the responsibility of this over. They've really bowled well so far, really well so far. And now Ishan Khan, can he add to the tally of his predecessor as well? That took a slow bounce and wide in the end, but for a moment just caught the batsman off guard there. So, mid-age worries. Really good start so far. Now, can he replicate the bowling of his predecessors like we spoke now? Cut it really well, and that's going to roll for 4, I think. No deep fielder there because, of course, both the fielders are on the offside at the outer circle. So that's going to be 4 more runs. Really well hit by Pankaj, and that brings them up to 19. So much needed boundary once again. Is this where they found their groove now, the Midlife Avengers? Is this where they start racking up the runs? We shall see. They want to make this a little bit interesting, and I think there's going to be a change in field. The fielder there on square just a little wide and deep. Nobody on the offside here. All at the edge of the outer circle. Midlife Avengers once again. This time swings it hard. There's a fielder there. He should get to it. So it's only going to be a single. But he got a good connection on it. So that's another single. Takes them up to 20 in the 5th over. Slowly and steadily building up their innings, both of them. Really important to start accelerating sometime soon. Oh, that was close. That was a good bounce. And they're going to get a single there. Just a bye in the end. And a wayward throw by the wicketkeeper. But still just a single. So, 21 on the board. In the attack now. Just charging the ball well. And is there a chance to take a single there? That's going to be a little bit of a misfield. Which is going to get them a single. 7 and 7 for both of them so far. 7 from 5 balls for Pankaj. 7 from 15 for Satya. Satya now on strike. Can he get us another 6 in this over? Good ball. Really good ball this time. So 22 for 2 so far. This is going to be the last ball of the 5th over. And, well, just one more over after this in the power play. And then things get a little bit tougher. For the boundaries, of course. Not so much for the singles. But, well, that is that. So,
that brings us to the end of the over. Really good over in the end by Ishan. 1-6, which was expensive, but otherwise really good bowling. And that's 22 for 2 after 5 overs. So now, who's going to bowl the sixth and final over of the power play? I think the responsibility is going to be going to Ram, and well, you have him there stepping up for his third over. Really good. He'd gone for a six earlier, but this time, well, just goes behind and two fielders converging. So that's not going to be any runs. They're not going to take those risks there. They don't want to get a wicket done over via a run out, that's for sure. And that's lifted up and chance for a catch maybe, but just goes by the fielder, and that's going to be 4 runs. So really well hit by Pankaj now. He has come in, had a couple of fours already, good boundaries. He is accelerating the score a little and adding to the tally, much needed by the midlife Avengers. Ram once again, it's gone for a 6 and a 4 in the last 2 overs. Just cuts it slightly, not going to be single there. Satya not interested. Could have maybe we could have taken a single. Could have taken a single maybe, especially looking at where the ball went. The gap there really essential. And no, that's not going to be a single now. This would be far more riskier than the previous one. But dot balls, well, you don't want those, do you? And especially when the final few balls of the power play are at stake. Can they have a couple of boundaries now? Really good ball once again by Ram. Ram once again. Now, slower bouncer there, and that's going to be the end of that. So you can see no runs there. 26 for 2 at the end of 6 overs. Really brilliant bowling by Ram. Just 1 run of that over. So now, 26 for 2 at the end of 6 overs. Just readjusting the fielding here now, the bowling side. But really well start for the mid-age Warriors. 26 for 2 at the end of power play. Pankaj and Satya at the crease. Who's going to be bowling now? Ram has done 3 overs already, and well, one would assume they would probably save him for later, the 1 over that is left, and he cannot bowl back to back anyway, so that's a different conversation. Ishan now looks to be back in the attack. So Ishan Khan given the responsibility.
That's a good shot. And well, that, for a moment, that was worrisome. Well, ultimately, they're going to get them a single. Ishan once again. Good defense there. And there it is. Well, they have their man right there. So that is the opportunity. Now the third wicket has fallen. So it's 29 for 3. Now Satya loses wicket. 8 runs in 19 balls. Played a very slow innings. If you look at from a T20 perspective, you hear the crowd just getting a little angsty. But well, Satya has added some score. And that was important. So, resume once again now. New batter at the crease. Danish has been given the responsibility and it's 29 for 3 at 6.4 overs. Really good bowling by Sean Khan. He gets a wicket for himself as well. And now in the attack once again, Danish just defending that one. Just taking it slow. Maybe just wants to see out this bowler in the end. Once again now, final ball of the over for Ishan. That could have been a wide, but he just swung it and that goes through the fielder for 4 runs. That's a really, really good shot. The fielder a little unaware, maybe just, distracted by what's happened before him, the few wickets that we've seen. Maybe just happy about whatever was in his mind. And in that moment, the ball fits through his hands. And that's 4 more runs. So 33 for 3 at the end of 7 overs. Projected score on the current trajectory is 94. And that's not going to be enough, is it? They need something more. Are they going to find it? Arav now a new bowler in the attack. Faster approach, really good contact though, and that's going to go long for a big 6. Well, not the best start for Arav. On target, but it was in the slot in the end, and a really, really good 6. Much needed 6 for the midlife Avengers. Good to see the replay here right in front of us. Really good hit. And that's flown long. Arav in the attack once again. This time, I think that's going to be a no ball. No ball indicated by the umpire. Free hit coming up. That is a free hit. That is a chance now. Up to 40. Run from the no ball and a free hit now. Arav slightly under pressure maybe. Free hit chance now. And swing and a miss there. They can take a single. Well, take the bye. Of course, remember, you can be run out on a free hit. They need to be mindful of that. But a chance there just goes away. So, a couple more runs on the board now for midlife Avengers.
And out of just a little bit expensive, but a good ball now. Danish now faces Arav Pankaj up to 19 already. He's got a couple of fours and 1-6. And now really good defense by Danish. The mid-age Warriors, they had a brilliant start, especially in the power play. They restricted the midlife Avengers to a very, very, very conservative score, if one might say so. And now, Danish and Pankaj just threatening to form a partnership here, try to hit it in the gap. It's just going to be a single. There's a fielder right there at square. But the runs are racking up slowly and steadily. They're inching closer to the 50 mark. The projected score is now up to 112 from 94 to 112. I think they need something close to 150 on a pitch like this. This is a batting friendly pitch more often than not. Now, oh, there it is. He's got his man. It kept low. The ball was low all along, and that is the 4th wicket of the midlife Avengers. And the mid-age Warriors now sitting pretty on there. They're looking good, and the players just coming in to congratulate Arav. He's the youngest chap here, isn't he? Playing amongst men, and well, responds in kind. He went for a 6, and well, that didn't faze him, did it? 6 off the first ball, and he came back with a couple of brilliant deliveries. Of course, a few more runs there, a few extras as well, no ball, but that didn't faze him, and he's taken a wicket, a very, very important wicket there. Pankaj is dismissed for 19 runs. And well, that is the wicket they wanted. 19 runs. He is the highest scorer for the midlife Avengers so far. And now, well, 4 wickets down. Around 8 overs. They are going to start losing their batters at this rate. The middle order under pressure as well. And that's not what you want, right? You want those middle orders to see off your mid overs up to about 13, 14, 15, and then just, increase the acceleration, just bat a little bit towards the end. Let's see if that is going to happen today, because 4 wickets down already and slightly stressful. Arav now on the ball. Wider approach this time, but no ball indicated by the umpire. I think he stepped out once again, so that's going to be another free hit. A single run added and a free hit as well. Now the new batter, Rahul Shroff. Can he make something of this single? That's the question. And a swing and a miss. A really good ball by Arav now once again. He comes through. Whenever he makes a mistake, he comes through on it, really, on the next ball itself. He's been that effective. Now, let's just have a look at the score once again. It's been a decent match so far, but really, really good match for the mid-age Warriors, who've restricted the midlife Avengers for 44 for 4 in 8 overs. So, end of 8 overs. Now the attack once again. And you can see the low bounces there, staying really, really low in the end, not coming onto the bat as easily. And that is favoring the bowlers, isn't it? Single there, Rahul Shroff and Danish on the crease. And Ishan Khan here for his 3rd over, of course. A maximum of 4 overs possible per bowler. T20 rules, of course. And now they're going to take a single. I think they're going to be happy with that single there. Nothing more they can do in that position. Once again now, Ishan Khan. That's a wide ball. That's going to be a wide. So, a couple of opportunities. Maybe to just strike them towards cover. But not taking the risks right now, it seems. Ishan once again. And that's a swing and a miss. Well,
Really just fist the ball by the striker there. Danish, 6 of 6. Rahul Shroff, 1 of 3. Yet again. That's a slower ball this time, and no, to a single. Not going to take a single there, Danish. Rahul Shroff on the non-striker's end. Shot once again. Now in the attack, and well, that's it towards the leg side, and the fielder there just making sure that he protects it well at long on. And just a single run. Good fielding at long on there. On the attack now, and that's going to be a flighted ball, but hit straight on the full toss. The fielder, is he going to get there? Well, doesn't get there in time, and that's going to be 4 runs, and the 50 comes up for the midlife Avengers. 50 up for them. 53 for 4 so far at the end of 9 overs. 9 overs up, one more over before we have the drinks break, of course. 53 for 4 so far. Now, Arav back in the attack. Really got an important wicket last time out. Pankaj's wicket, kept the ball low. Starts with a wide ball, and they're going to get a single off it, aren't they? Are they going to go all the way for 4 runs? And I think it has, well. Wide. Really, really well hit now. Really good hit by Rahul Shroff there. Gets 4 runs. Brilliant hit there. So, Rahul Shroff now picking up steam. Arav now on the attack, and really good connection. And that goes past the fielder there. And I think they're going to roll for the 4 once again. So 4 signaled by the umpire. That's 4 more runs. Now they're racking up the runs, aren't they? 63 on the board now. Now once again, ball back to Arav. He took a wicket in the previous over, if you remember. Ultimately, that it was the defining moment, not the 6. Can he repeat something similar here? Wider approach this time. Wide is the indication. Now in the attack again. Shorter bouncer now, and well, there's a shout there. Good stumping by the wicketkeeper, just showing his prowess with quick movement, and 2 really good balls by Arav now.
Rahul Shroff now on strike. Arav in the attack. Still few balls left in this over. And now that's hit huge down the line. Fielder coming there. Is he going to be able to stop that? Good fielding there. Really good fielding. And just a single in the end. I think for a moment he thought he would get a four there. That was good contact, but not the best. Once again, Arav lower bounce there. Once again, you can see that's the same pattern as before. An overthrow there. Overthrow. That's another chance, but they were not ready for it. There was a chance there. So 22 runs of this partnership. Good partnership so far, and Rahul Shroff back on the attack. Oh, swing of a miss once again. Really good bowling. And that's going to be the end. So, at the end of 10 overs, it's 66 for 4 for Midlife Avengers. They need to accelerate. They need more runs if they want to take it till the end. They want to defend this on this ground. They need something closer to 150. Well, we're going to take a small drinks break and then see what the approach for the next 10 overs is going to be for the Midlife Avengers.
And now we're back. We're in the second half of the first innings. 10 more overs to go. And Ram, well, he's been given the responsibility here. And what we've been told is that the players here would want to listen to both kinds of commentary. So we're going to go a little bit of Hindi as well. और इसी बात पे राम ने एक विकेट लिया अब तक और राहुल श्रॉफ और दानिश बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 फोर्स सो फार राहुल श्रॉफ के और राहुल श्रॉफ की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे और एक मिस हो गया है वाइड बॉल दिया जाएगा बॉलर को लगा ज़रूर कि उनने ऑन टारगेट बॉल डाली थी लेकिन लेग साइड से पीछे निकल गई सबको मिस करते हुए और वो होगा वाइड बॉल एक और बार फिर से राहुल श्रॉफ इस बार मिस करते हुए बॉल उनको चकमा दे के विकेट कीपर के हाथ में तो अच्छी बॉल अभी इस बार और इस बार घुमा दिया है और विकेट कीपर के हाथ में आवाज आई जरूर लेकिन विकेट कीपर इतने श्योर नहीं लग रहे थे और अंपायर बिल्कुल ही श्योर नहीं लग रहे थे और इसीलिए तो राम को लाए हैं बॉलिंग में राहुल श्रॉफ की ही विकेट इनको चाहिए और वो अगेन लेग पे लगा है लेकिन अंपायर हैप्पी विद दैट देखते हैं उनका इंडिकेशन क्या रहता है अंपायर का एक बार फिर से रिप्ले में देखेंगे शायद हल्का सा बैट लग गया होगा देखते हैं लग तो नहीं रहा बट लेग मिसिंग था एक और बार इस बार कट है और वहां पर फील्डर आएगा जरूर टाइम पर तो एक ही रन आएगा यहाँ पर बाउंड्री नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग राम का आखिरी ओवर है ये और इसी के साथ राम की बॉलिंग समाप्त होती है 11 ओवर पूरे हुए 71 runs for the midlife Avengers. $70 runs so far, sorry. राहुल श्रॉफ 15 रन 12 बॉलों में 12 गेंदे और उसमें से 3 4 आए हैं और दानिश की बैटिंग भी काफ़ी डिसेंट रही है 10 रन अब तक मारे हैं 12 बॉलों में लेकिन दर्शक यहाँ प्ले फास्टर की मांग कर रहे हैं स्पेशली डगआउट से वो भी जानते हैं कि 9 ओवर बचे हैं और इन ओवरों में मारना बहुत ज़रूरी है विकेटें ज़रूरी है हाँ जी लेकिन अगर आप 110 रन मारेंगे तो आपका घर जाना निश्चित है इसी के साथ वाइड बॉल के साथ शुरुआत हिरेन जडेजा के ओवर की इनका पहला ओवर पहली बार इनको बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थामी है क्या ये अपॉर्चुनिटी है क्या ये चांस है मे बी दानिश का कुछ बड़े रन्स बनाने का देखेंगे इधर दानिश अब स्ट्राइक पर राइट हैंडर और ये अच्छा कांटेक्ट कवर की तरफ और वेल लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है मौजूद और अच्छी फील्डिंग करते हुए वापस भेजेंगे एक ही सिंगल रन आएगा सिंगल से काम नहीं बनेगा मिड लाइफ अवेंजर्स का सिंगल से ज्यादा रन्स की जरूरत होगी और ये घुमाने की कोशिश उसी बात पर और राहुल श्रॉफ अपनी विकेट खो बैठे वही हम बोल रहे थे कि सिंगल से ज्यादा की जरूरत है और ये लेग साइड पर घुमाने की बहुत बढ़िया कोशिश राहुल श्रॉफ की बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है 3-4 मार चुके हैं लेकिन जब आप ऐसा रिस्क लेंगे और मिस करेंगे तो फिर विकेट जानी ही है राहुल श्रॉफ हंसते हंसते वापस आ रहे हैं लेकिन हंसते हंसते मिड लाइफ अवेंजर्स के लग गए हैं रास्ते कोई तो हीरो होगा जो 30 40 50 रन मार सके मिड लाइफ अवेंजर्स के लिए क्या कोई स्टेप अप कर पाएगा 72 फ्रॉम 5 है स्कोर अभी बंकिम गोगरी आएंगे अब क्रीज पर
पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दानिश के साथ। ये अच्छी पार्टनरशिप थी अभी तक राहुल श्रॉफ और दानिश की। 25 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, बट वो मुकाम कभी पार नहीं किया है अब तक मिड लाइफ अवेंजर्स ने। वही 10 15 20 रनों की पार्टनरशिप रही है, और बहुत अच्छी बॉलिंग, इसीलिए बहुत अच्छे इंटरवल्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है मिड एज वॉरियर्स ने। और वो ही यहाँ दिख रहा है, बहुत ही डिफरेंट वेरिएशंस में बॉलिंग की है, बहुत ही अलग अलग बॉलर्स को इनने अपॉर्चुनिटी, और हर बॉलर वो अपॉर्चुनिटी सीज करके कुछ ना कुछ करके ही आए हैं। हिरेन जडेजा का पहला ओवर था ये, और उनने भी एक विकेट निकाल लिया। सबने एक 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 विकेट निकाल लिया, ताकि भार सिर्फ एक बॉलर पे ना रहे। पर उसी बात पे, क्या कोई बैट्समैन बाहर लेने के लिए तैयार है? क्योंकि किसी ना किसी को तो बाहर लेना ही पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा मिड लाइफ अवेंजर्स के बैटिंग ऑर्डर का। अच्छे रन ऐड किए हैं पंकज ने, अच्छे रन ऐड किए राहुल श्रॉफ ने, दानिश भी अब क्रीज पर है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। 30 35 40 रनों की जरूरत है एक बैट्समैन से। सिंगल से स्टार्ट करेंगे बंकिम गोगरी। इसी के साथ 73 रन्स बोर्ड पर। हिरेन जडेजा, और ये घुमा दिया है लेग की तरफ, लेकिन फील्डर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया शॉट दानिश का। इसी के साथ 4 रन दानिश के खाते में। ये 4 जरूरी तो बहुत थे। इसी बात पे दानिश ने एक चीज प्रूव की है कि भले विकेट जाए, वो बॉलर से डरेंगे नहीं, कतराएंगे नहीं। वो उठ के 4 6 मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दानिश इस बार फेस करते हुए बॉल, और स्लाइट लक देयर, बहुत ही अच्छा लक उनका, एक लाइफ लाइन मिल गई हो जैसे। और इसी के साथ वो अभी भी विकेट पर कायम है। दानिश 2 चौके मार चुके हैं, 15 रन 15 गेंदों में। और हिरेन जडेजा की आखिरी बॉल पहले ओवर की, और ये घुमा दिया है ऑफ की तरफ, और वहां पे फील्डर मौजूद। सिंगल आएगा, एक सिंगल। तो इसी के साथ 12 ओवर पूरे हुए मिड लाइफ अवेंजर्स के, और 78 फॉर 5 स्कोर बना है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बॉलिंग साइड फिलहाल बहुत खुश होगी, बिकॉज काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया है, कंटिन्यूसली इंटरवल्स पर विकेट लिए हैं। और ये पिच एक अच्छा बैटिंग पिच है। आज बॉल राइज नहीं कर रही, बॉल लो रह रही है, वो एक फ़र्क है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा बैटिंग पिच है यहाँ पे। खालसा ग्राउंड में हम सब मौजूद है। सेवेंटी एट फॉर 5। काफ़ी ओवर नहीं बचे हैं अब, रन्स बनाने होंगे। वाइड बॉल, 1 रन। वंस अगेन ये डॉक्टर प्रदीप का पहला ओवर है, और एक कैच की गुंजाइश, लेकिन हाथ पर लग के बाहर गिर गया। डिफिकल्ट कैच था, इजी नहीं था, बहुत हाई था वो कैच। आरव ऑफ कोर्स हमारे न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की है आरव ने आज, विकेट भी ली है, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। और एक बार फिर से, इस बार ग्राउंडेड शॉट, सिंगल आएगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मेक श्योर करना होगा कि रन आउट ना हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इजी विकेट नहीं दे। 80 रन्स अब क्रॉस हो चुके हैं, और 81 फॉर 5 प्रोजेक्टेड स्कोर अभी 131। 150 रनों की जरूरत होगी मेरे ख्याल से। देखते हैं, विकेट्स इन हैंड ज़्यादा नहीं है, 5 अभी भी है, लेकिन फिर बॉलर्स टेल एंडर्स आना चालू होंगे। यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। Bankim Gogri 2 from 2 so far, and Danish 17 runs. And that's a very good shot. That's gonna go and find 4 runs here. बहुत ही अच्छा चौका।
तो इसी के साथ 4 रन और ऐड हुए। दानिश 21 रनों पर। ऐसी इनिंग्स की बहुत ज़रूरत है। क्या दानिश एंड तक टिक सकते हैं? एटलीस्ट 17-18 ओवर तक इस बार स्विंग एंड मिस क्लोज था। बॉल फिर से चकमा देते हुए कीपर के हाथों में। कीपर कहते हैं थैंक यू सो मच एंड बैक टू द बॉलर। दानिश दानिश के सामने बंकिम गोगरी और डॉक्टर प्रदीप की बॉल आते हुए लो रह गई बॉल इस बार वापस, बट क्या वो वाइड होगी? नो का इशारा दानिश का। वाइड बॉल का इशारा वहां वही रहा। हमको लगा ये वाइड होगी। अंपायर थोड़ा चीकी खेलते हुए वहां पे बहुत वक्त इंतजार किया उनने देखने के लिए कि बैट्समैन क्या करते हैं, और फिर वाइड का इशारा। तो थोड़े अंपायर भी मूड में लग रहे। गुड बॉलिंग इस बार, बहुत अच्छी बॉलिंग, और मिड विकेट के थ्रू बहुत अच्छा थ्रो एज वेल। अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, टाइट फील्डिंग। और इसी के साथ 13th ओवर समाप्त होता है। डॉक्टर प्रदीप का ओवर 9 रन, एक 4 आया था, बहुत ही बढ़िया शॉट था वो। 87 फॉर 5 एट द एंड ऑफ 13 ओवर्स। सो अब 7 ओवर्स रिमेन करते हैं, और इसी के साथ नेक्स्ट ओवर की शुरुआत। अच्छा थ्रो यहाँ पे 22 यार्ड्स। भागना बोलना आसान है, लेकिन व्हेन यू आर पैडेड अप, व्हेन यू आर विद अ बैट, विद अ हेलमेट एंड टायर्ड फ्रॉम प्लेइंग ऑल दोस डिफिकल्ट शॉट्स, तो बॉडी पर काफ़ी काफ़ी स्ट्रेनिंग होता है। एवरी रन इज ट्रेनिंग एंड यू कैन सी। इसीलिए दानिश थोड़ा वहाँ पे जस्ट कैचिंग हिज ब्रेथ एज दे से। और ये बहुत ही बढ़िया घुमा दिया है, ये 6 रह सकता है। और बाउंड्री पे कैच की कोशिश, और अंपायर का इशारा क्या रहेगा? 6 कंफर्म बाय द अंपायर। बाउंड्री पे फील्डर तैनात जरूर था, हाफ चांस था उनके पास, लेकिन डिफिकल्ट कैच एंड बहुत ही बढ़िया छक्का बंकिम गोगरी का। 94 रन ऑन द बोर्ड। बंकिम गोगरी अब बहुत ही बढ़िया 6 मारते हुए क्या एक और 6 फाइंड कर सकते हैं? इसी के साथ 100 रन पूरे होंगे अगर 6 आएगा तो। लेकिन इस बार बॉलिंग बहुत ही बढ़िया हिरेन जडेजा की। हिरेन जडेजा प्रीवियस ओवर बहुत अच्छा था, इफ यू रिमेंबर 9 रन दिए थे, और बहुत क्रूशियल विकेट भी ली थी। राहुल श्रॉफ की विकेट ली थी हिरेन जडेजा ने। वंस अगेन एंड ये लेग साइड की तरफ, फील्डर देयर एट द डीप एंड जस्ट शॉट देयर। आरव बहुत अच्छा थ्रो, और एक सिंगल रहेगा। 95 ऑन द बोर्ड। दानिश बैक ऑन स्ट्राइक नाउ। 23 runs ऑफ 22 balls फॉर दानिश। 3-4 भी मार चुके हैं। आरव टाइट फील्डिंग इन द डीप। एंड इस बार बॉल बाहर की तरफ, बट लीगल बॉल, लीगल डिलीवरी। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, 14th ओवर के एंड पर हम हैं अब। सेकंड ओवर है ये हिरेन जडेजा का। क्या कुछ गोल खिला सकते हैं? क्या एक और विकेट ले सकते हैं? और ये घुमा दिया है, बहुत ही बढ़िया छक्का। पार्क के सीधा बाहर, ढूंढने के लिए बंदे भेजने पड़ेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया सिक्सर। इसी के साथ 101 रन्स, 100 रन्स का मुकाम पार हुआ। और ये मुकाम एक टाइम पर बहुत ही दूर लग रहा था, जब 2 रनों पर एक विकेट गिरी थी, और फिर 6 रनों पर दूसरी विकेट भी गिर चुकी थी। एक टाइम पे 29 फॉर 3 चल रहे थे मिड लाइफ अवेंजर्स, और वो मिड लाइफ अवेंजर्स ने जो पकड़ा है स्पीड, जो राजधानी पकड़ी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही बढ़िया मार दिया है, लेकिन 7 का रन रेट अभी, जब एक टाइम पे 2 के रन रेट से चल रहे थे, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दानिश का, राहुल श्रॉफ का, पंकज का, और धीरे धीरे टीम ने एक स्कोर बिल्ड किया है जो वो थोड़ा और आगे अगर ले जाएं तो डिफेंड कर सकते हैं। मिड एज वॉरियर्स थोड़े शायद वरी
में अब हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा ही चलता रहा तो उनका ब्रिलियंट स्टार्ट, वेल जैसे कह रहे थे हम, उनका ब्रिलियंट स्टार्ट वेस्ट हो जाएगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 103 रन अब, और बहुत ही अच्छा कट बॉलर और अच्छी फील्डिंग वहां पे, स्मार्ट सिंगल, गुड थ्रो, लाल टोपी वाले फील्डर बहुत ही तैनात। डॉक्टर प्रदीप का दूसरा ओवर अब, क्या वो एक विकेट ले सकते हैं? अच्छी बॉल इस बार, दो फील्डर के बीच में निकल नहीं पाए, और वो 2 रन भागने की गुंजाइश थी, लेकिन एक सिंगल से दोनों प्लेयर थोड़े थके थके लग रहे हैं। शायद एक और मिनी ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत इनको है, शायद थोड़ा गेटोरेट, शायद थोड़ा एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट्स इनकी शायद मदद करे, बिकॉज प्लेयर्स थोड़े हाफते हाफते लगते हुए, वेल टीम का नाम मिड लाइफ अवेंजर्स तो है ही, लेकिन स्ट्रोक्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, नो रन्स देयर, डॉट बॉल। दानिश 30 रन्स क्रॉस करते हुए, वी वर स्पीकिंग अर्लियर कि कोई प्लेयर शायद 30 या 40 क्रॉस करे तो कुछ बात बन सकती है मिड लाइफ अवेंजर्स के लिए, और दानिश शायद वो प्लेयर हो सकते हैं। 30 क्रॉस करते हैं, और अभी गैप में बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन और हासिल होंगे, और दानिश ने अभी, वो कहते हैं ना, एक फ्लो स्टेट एंटर कर लिया है, जहां वो बॉलर्स को बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं, वो पिच को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं, और वेल 4 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं दानिश। 34 runs already for him. 30% of the runs of his team have been scored by Danish so far. क्या वो और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टीम को इस बार स्वीप करते हुए? फील्डर हैं वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन बॉल एक्चुअली खिसक गई। अच्छी फील्डिंग लगी तो थी, लेकिन बच्चा थोड़ा कच्चा रह गया, उसके हाथ के नीचे से बॉल निकल गई, और 4 रन ऐड हो चुके हैं। तो एक और 4 रन दानिश के लिए, और इसी के साथ 15th ओवर कम्स टू एन एंड, 113 फॉर 5 एंड 38 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर दानिश। वेल, क्या ये पार्टनरशिप है जो कुछ गोल खिला सकती है? 41 रन्स ऑफ 22 balls in this partnership between Danish and Bankim Gogri. Bankim Gogri now on strike with a brilliant 6 earlier. The question is, क्या वो कुछ रिपीट कर सकते हैं? क्या वो एक और 6 ये ओवर में फाइंड कर सकते हैं? They need a couple of boundaries every over now. Bankim Gogri on strike, और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी अक्षेश की। आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम टू गेट अक्षेश बैक इन द अटैक, बिकॉज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है अक्षेश ने पहले 2 ओवर्स, और बहुत स्मार्टली उनके 2 ओवर्स बचाए रखे हैं डेथ ओवर्स के लिए। तो अक्षेश के अब 2 ओवर होंगे, ये 16th ओवर अक्षेश डालेंगे, एंड वन वुड अज्यूम 18th या 19th ओवर भी अक्षेश डालेंगे, इफ नॉट द 20th ओवर। वेल, व्हाट the mid-age warriors need now from Akshesh is a wicket, not the wide ball. Extras की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे लेवल पे। बैट्समैन का थैंक यू आता रहा एक्स्ट्रा के लिए, बहुत खुश। – 114 for 5। अक्षेश त्रिवेदी इस बार बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, और 4 रन और हासिल होंगे। बंकिम गोगरी 15 रन उनके लिए भी, 1416। अब ये पार्टनरशिप 46 पर पहुंच चुकी है, 4 रन शॉट ऑफ 50 रन इन दिस पार्टनरशिप। बार ऑन स्ट्राइक वंस अगेन, और बंके मिस करते हुए स्विंग एंड अ मिस, लेकिन
जीरो कॉन्टैक्ट और एक लाइफलाइन मिलती हुई। यहां एक विकेट आ सकती थी शायद, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर लक फॉर अक्षय त्रिवेदी। 118 रन पूरे होते हुए। और इस बार गुड डिफेंस, वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड कमबैक फ्रॉम अक्षय त्रिवेदी। And that's hit very well, गैप में शायद, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात। अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर भी रेडी और एक रन ही आएगा, लेकिन गुड स्ट्राइक रोटेशन। 38 runs so far for Danish and 16 runs on the board for Bankim Gogri. 40. तो ये पार्टनरशिप बहुत ही कीमती है बैटिंग साइड के लिए, और ये पार्टनरशिप तोड़ना उससे भी ज्यादा कीमती है बॉलिंग साइड के लिए। अक्षय त्रिवेदी, फाइनल बॉल ऑफ द ओवर एंड अ ब्रिलियंट एंड टू द ओवर बाय अक्षय। इसी के साथ 119 for 5 at the end of 16 overs. अभी सिद्धार्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, न्यू बॉलर एट द क्रीज। मे बी समथिंग न्यू इज रिक्वायर्ड आफ्टर ऑल टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप, एंड इसी के साथ पहली बॉल में ही ब्रिलियंट डिलीवरी और बंकिम गोगरी की विकेट उधर ही ले ली गई है। बहुत ही अच्छा इनिंग्स बंकिम गोगरी की तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। 48 रन्स की पार्टनरशिप यहां समाप्त हुई, लेकिन हम कह रहे थे कि सिद्धार्थ माइट ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, एंड ही हैज डन एग्जैक्टली दैट। एंड इसी के साथ 6th विकेट फॉल्स, 119 for 6। और इसी के साथ मुनीश, न्यू बैटर ऑन द क्रीज। 38 रन्स। दानिश टिल, क्या दानिश एंड तक टिक सकते हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फाइनल फील्ड सेट यहाँ पे, फ्यू चेंजेस टू द फील्ड. नाउ सिद्धार्थ इन द अटैक, एक और बार, इस बार वाइड बॉल रहेगी, एक और एक्स्ट्रा. एक 120 रन अब पूरे हुए. सिद्धार्थ इस बार ऑन टारगेट होने की पूरी कोशिश रहेगी और स्विंग एंड मिस फिर से, और वहां पे फील्डर नहीं है, सिंगल आना जरूर चाहिए. एक ही रन आएगा. 2 रन भागने की गुंजाइश थी, लेकिन प्लेयर्स एक से काफी. मे बी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको प्लेयर्स को ज्यादा थकाना नहीं है एक दूसरे को, बिकॉज the extra running that you do takes the wind out of your lungs, as you say, and ultimately might just take that final power away from your stroke. When you're going for a 6 like this, is that going to be in the gap? Yes, there is, and that's going to be 4 runs. So 4 more runs added to the kitty now. Thank you so much, says Danish, and he's up to 42. This is an absolutely brilliant performance from Danish, and जैसा हम कह रहे थे, जो भी लैंग्वेज में कहो, तारीफ दानिश की ही होगी. 42 रन्स फ्रॉम जस्ट 30 बॉल्स नाउ. इतना अच्छा एक्सेलरेट किया है दानिश ने. 1 6 6 चौके, फियरलेस बैटिंग. एक और बार यहाँ पे गैप में, मे बी फील्डर इज कन्वर्जिंग, कैन ही स्टॉप इट? नो, कैन नॉट गेट देयर इन टाइम. वंस अगेन फील्डर, और एक और 4. तो दानिश, well, he is up to 46 now. 46 runs on the board for Danish. 130 almost up, 129 right now. 4 runs away from a half century, Danish, and a well deserved half century. यही वो पार्टनरशिप थी, यही वो सोलो परफॉर्मेंस थी. एक्चुअली पार्टनरशिप भी हटाई, आप बंकिम चौधरी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, उससे पहले भी राहुल श्रॉफ के साथ भी खेले हैं दानिश, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस यही वो है. 30 40 50 में भी जो हम कह रहे थे बन सकते हैं एक टीम के. और ये बहुत अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो. दानिश बहुत इजी लेते हो इन दी एंड. शायद उनको लगा प्लेयर थ्रो नहीं करेंगे, एंड वेल थोड़े थक चुके हैं दानिश, वो दिख रहा है. ऑफ कोर्स मैच फिटनेस थोड़ी सी लैकिंग है, लेकिन 46 रन्स, 47 रन्स मारे जरूर है दानिश ने. अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे Munish on the strikers end. Now he's watched Danish score those brilliant fours in front of him. क्या Munish लेफ्ट हैंडर कुछ ऐड कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे गैप में, और 4 रन और Munish के. 134 now up for the midlife Avengers. बहुत ही बढ़िया स्कोर बना दिया है. जैसे स्टार्ट किया था उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा किया, और इसी के साथ 17th ओवर समाप्त होता है. 134 for 6. 3 और ओवर है. प्रोजेक्टेड स्कोर नाउ अप टू 158. एक टाइम पे 40 प्रोजेक्टेड स्कोर था. अब रियल क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ली है बंकिम गोगरी की, लेकिन 14 रन भी कंसीड किए अपने ओवर में, कपल ऑफ फोर्स. द रियल क्वेश्चन इज, अब फाइनल ओवर अपने स्पेल का ईशान खान डालने आएंगे, क्या वो एक विकेट ले सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड हमको पता है विच विकेट द मिड एज वॉरियर्स नीड. दे वांट Danish's wicket, they need Danish's wicket, and well, Danish is the final straw in their brilliant bowling performance. Ishan Khan now. Leg side pe wide. Once again, extras need to be avoided. Close to 25 extras ho chuke hain ab. And these could be match changing runs in the end. Almost 25 extras. इतने एक्स्ट्रास आप नहीं देना चाहोगे, बिकॉज एवरी रन एडिंग अप गिव्स कॉन्फिडेंस टू द बैटिंग साइड व्हेन दे आर डिफेंडिंग दिस. एंड नाउ बहुत ही बढ़िया शॉट,
इन द एयर, फील्ड ऑन द नीटेड और स्लाइटली पकड़ नहीं पाए, मुश्किल हो गया इन द एंड। और 2 के लिए भागने की गुंजाइश जरूर है, भागेंगे और इन टारगेट। ऐसे एक मोमेंट पे लगा था 4 रन्स आएंगे गैप में, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, वहां पे रोक कैच पकड़ नहीं पाए, मुश्किल था। फ्लड लाइट्स के अंदर, प्रेशर के अंदर थोड़ा जज करना मुश्किल होता है, हाथों पे बहुत ही कड़ा इम्पैक्ट भी आता है बॉल का, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पे गिव अप नहीं किया, 4 नहीं जाने दिया। और इस बार अगेन स्विंग एंड मिस और ये वाइड बॉल। दानिश नाउ अप टू 49, 138 फॉर द मिड लाइफ अवेंजर्स। सिर्फ एक बॉल हुआ है ये ओवर में, वाइड, फिर 2 रन और फिर वाइड। वाइड एक और बार। बॉलर थोड़े थके हुए लग रहे हैं और उनके टीममेट्स उनसे बात करते हुए कि भैया जी 3 जो स्टंट स्टंप्स हैं उन पे डालिए, वाइड एक्स्ट्रास बहुत महंगे पड़ सकते हैं। ऐसे पिच पर एवरी रन मैटर्स। और ईशान खान जी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है आज, लेकिन ये फाइनल ओवर थोड़ा हाथों से छूटता जा रहा। और इस बार रिटर्न्स विद अ ब्रिलियंट बॉल। ऐसी ही गेंदों की गुंजाइश है टीम को, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इस बार। और ये बहुत अच्छा शॉट, एक और रन वहां पे आएगा और इसी के साथ 50 रन्स पूरे हुए दानिश के। 50 कम्स अप फॉर दानिश, 50 अप फॉर दानिश। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दानिश का। 50 इन जस्ट 35 बॉल्स, 7 फोर्स, 1 6। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, एक और बार वहां पे फील्डर है डीप में, फाइन लेग पे मैन है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और दानिश 50 रन, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और इसी के साथ रिटायर हर्ट वापस आ सकते हैं, रिटायर हर्ट हुए, रिटायर आउट नहीं, लेकिन दूसरे बैट्समैन को चांस देते हुए दानिश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रन ऐड किए अपने टीम के लिए। और बाकियों का सपोर्ट भी क्रूशियल रहा है, पंकज, पंकिम गोगरी, राहुल श्रॉफ एंड मेनी अदर्स। दानिश नाउ बैक टू द पेविलियन, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। सो सिद्धू नाउ द न्यू बैटर who's going to come on strike. इसके साथ अच्छा घुमा दिया है, सिंगल आएगा और सिंगल रनिंग, वेरी गुड रनिंग बाय बोथ ऑफ देम। 142 ऑन द बोर्ड। अब एक और बॉल बाकी ये ओवर में। बहुत ही अच्छा स्कोर बना लिया है इंडियन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, इट्स गोना बी अ 6 डायरेक्ट ऑन द नेट। बहुत ही बढ़िया शॉट मुनीश का। और मुनीश कहते हैं ठीक है दानिश भाई अगर जा चुके हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं। और एक बहुत ही बढ़िया 6 उनने डिलीवर कर दिया। इसी के साथ 148 एट द एंड ऑफ 18 ओवर्स फॉर मिड लाइफ अवेंजर्स। 12 गेंदें बची है, क्या स्कोर बन सकता है? प्रोजेक्टेड स्कोर 164 बता रहा है। अब लेट्स सी। नाउ
सिद्धू ऑन स्ट्राइक, न्यू बैटर ऑन द क्रीज, और इस स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी बॉलिंग अक्षेश त्रिवेदी की। यही चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी जब 16th ओवर चालू था, दैट अक्षेश शायद 19th ओवर पर आएंगे, और उसी हिसाब से 19th पर आया। अपना बेस्ट बॉलर उनने सेव किया है, उसका फाइनल ओवर अभी 19th ओवर के लिए। एंड वेल, मैं कहना नहीं चाहता कि सिद्धू या मुनीश रन्स नहीं मार सकते हैं, 100%। दे सीम टू बी वेरी वेरी गुड बैटर्स, बट I think to face Akshesh, you needed a set batter like Danish to be at the crease, जो confident थे, जो अपना विकेट गंवाने से डरते नहीं है। लेकिन शायद शायद सिद्धू ने वही चीज सोच के बहुत ही बढ़िया गैप फाइंड किया है, और 150 comes up for the team, 152, 152 for 6 now for the midlife Avengers. बहुत ही बढ़िया शॉट सिद्धू का, और वेल अगर ये ऐसे ही खेलते रहे, बिकॉज विकेट्स इन हैंड का अभी आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जाना है स्ट्रोक्स के लिए, आपको जाना है बिग शॉट्स के लिए, बिकॉज एवरी बिग वन इज वर्थ मल्टीपल रन्स. You might not take those singles, just go for those fours and sixes. What is going to be Akshesh's delivery now? Short, wide, and there it is. There is the brilliant ball. That's exactly what we were expecting from Akshay. Gets his second wicket of the day. He tried to swing at that, Sidhu, didn't he? And well, we were imagining that that might be the case because he really just wants to come out here and get those runs scored in. So we don't blame him. But Akshay read that as well. Kept the ball low, kept it straight on the stumps. And with that, it's 152 for 7. 18.3 overs. So, अब स्कोर है 152 for 7, 18.3 ओवर्स. फाइनल फ्यू गेंदें बची है और फाइनल फ्यू विकेटें भी बची है. क्या स्कोर बनेगा? 164 अभी भी प्रोजेक्टेड स्कोर लग रहा है बिकॉज ऑफ द 4 वी सॉ अर्लियर. पुरीन ऑन स्ट्राइक नाउ. Akshesh in the attack once again, and this time again gap find करने की कोशिश, लेकिन आरब वहां पे चौकंडे खड़े हैं. यंग एज पर भी बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते हुए आरव. अच्छी फील्डिंग सो फार, बहुत ही अच्छी बॉलिंग. 2 अच्छे ओवर्स डाले आरव ने. थोड़े एक्सपेंसिव रहे सेकंड ओवर में, लेकिन पहले ओवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ली. अब मुनीश आएंगे स्ट्राइक पर. लेफ्ट हैंडर, क्या इनके लिए फील्ड चेंज होगी? देख सकते हैं ये 2 गेंदें बची है और इसी का उठा दिया है फील्डर. वहां पे वेट करेंगे बॉल आते हुए उनके तरफ. सिंगल होगा. 154 for 7 in 18.5 ओवर्स. एक बाउंड्री की जरूरत है मिड लाइफ एवेंजर्स को. क्या उनको ये बाउंड्री मिलेगी? अक्षेश 33.5 ओवर सो फार, जस्ट 16 रन्स गिवन. 4.17 की इकोनॉमी है अक्षेश की, और 2 विकेटें भी ले चुके हैं. प्राइम बॉलर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर ऑफ द डे. राम के स्टैट्स भी इतने बढ़िया, और यहाँ पे एक शाउट, बहुत बड़ा शाउट, और इसी के साथ फिंगर गोज अप. तो एक और विकेट अक्षेश ने हासिल कर लिया. 154 for 8 फाइनल बॉल अपने ओवर की, और एक थ्रीफर अक्षेश के हाथ लग गया है. 154 for 8 at the end of 19 overs.
इसी के साथ फाइनल ओवर दिया है हिरेन जडेजा को, जिनने 22 रन कंसीड किए हैं। मतलब इकोनॉमी थोड़ी हाई होती रही, लेकिन एक क्रूशियल विकेट उनने भी लिया था। 154 फॉर 8 और ये वाइड, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट हासिल होगा मुनीश को। और क्या मुनीश एक बिगर मार सकते हैं, 4 या 6? अंपायर के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट चलती हुई, लेकिन अंपायर इशारा कर रहे हैं। अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं, लेग अंपायर भी। और अंपायर के साथ ज्यादा तू मैं करके फायदा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली अंपायर टेक्स द फाइनल कॉल। लेकिन यहां पे बैटिंग टीम का मोमेंटम जरूर गिरेगा। और 155 for 8 now. 19 overs. Final 6 balls. हिरेन जडेजा की, मुनीश on strike. और ये घुमा दिया है, लेकिन जस्ट बाय रहेगा। एक रन आएगा बाय वहां पे। दैट ब्रिंग्स पारस ऑन स्ट्राइक। अगर पारस की विकेट यहाँ फॉल होती है तो ऑफ कोर्स दानिश कैन कम बैक टू द अटैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। बॉलिंग टीम यहाँ पे विकेट लेना चाहेगी या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। टेल एंडर खेलते हुए शायद विकेट लेने में फायदा ना हो। और इसी के साथ प्लेड टुवर्ड्स द ऑफ साइड, फील्डर देयर, sends it back to the bowler, single. 157 on the board. एक 4 या 6 की जरूरत है मुनीश को। क्या अपने टीम के लिए वो ला पाएंगे? एक 4 या 6 वाइट मेक दिस गेम कंप्लीटली डिफरेंट। और मुनीश ने बहुत ही बढ़िया घुमा दिया है, नो फील्डर देयर, एंड दैट इज गोना क्रॉस द बाउंड्री। 6 रन का इशारा, बहुत ही बढ़िया शॉट। 163 कमिंग अप नाउ फॉर मिड लाइफ अवेंजर्स। बहुत ही बढ़िया शॉट, और मुनीश 2 छक्के ऑलरेडी मार चुके हैं। 163, 170 अराउंड द कॉर्नर। तीन बॉलें बची है। मुनीश, द लेफ्ट हैंड फेसिंग हिरेन जडेजा। मुनीश वंस अगेन, इस बार बॉल को थोड़ा लेट रीड करते हुए, लेकिन गैप फाइंड किया है बहुत ही ब्रिलियंटली, और 4 रन और आएंगे। 167 अब 2 गेंदें बची है, और मुनीश इज ऑन अ रोल। 2 4s, 2 6s so far. Munish 22 runs off only 9 balls. So Munish has been critically important for the team, especially in the last few overs. क्या रन बन सकते हैं यहाँ पे, और कितने रन बन सकते हैं? हिरेन जडेजा नीड्स टू फाइंड सम काइंड ऑफ ओपनिंग। मुनीश वो ही लेग साइड पे सिमिलर शॉट, बट इस बार काफी स्क्वायर फील्डर के हाथ में, और 1 रन आएगा। तो अब फाइनल बॉल ऑफ द इनिंग्स, फाइनल बॉल पारस के हाथ में। 168 for 8, 19.5 overs. हिरेन जडेजा 35 runs conceded in 12.5 overs, 12.35 की इकोनॉमी so far. 168 for 8, final ball of the innings. Hiren Jadeja, what is he going to do? Paras on strike. Paras, good shot there, good strike. There's a gap there. 2 रन लेने की कोशिश जरूर होगी, और 2 के लिए भागे हैं। क्या 3 आ सकते हैं?
दो रन आएंगे. That brings 170 up for Midlife Avengers at the end of 20 overs. 171 to chase for Mid-Age Warriors. बहुत ही बढ़िया स्कोर, बहुत ही बढ़िया स्कोर टोटल प्रदर्शित किया है इधर. आफ्टर being 6 for 2 and 29 for 3 at the end of power play. मिडिल ओवर्स में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बैटर्स का, और अल्टीमेटली काफी रिस्पेक्टेबल टोटल 170 आफ्टर 20 overs. 171 to win. The chase is on and it's going to come and start very soon.
आपसे जब वाइड जाता है, विकेट कीपर इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इफ दैट इज ब्रोकन तो पीछे 5 रन आ जाते हैं मुफ्त के। ऑलरेडी 11 रन्स इन एक्स्ट्राज। इतने एक्स्ट्राज एक पूरे इनिंग्स में होने चाहिए और ऑलरेडी फर्स्ट 2 ओवर्स में 11 एक्स्ट्राज जा चुके हैं। ऑन दिस एट दिस रेट, वेल, they will end up giving a, well, that's not a wide this time. Well, obviously this is not going to be the case, but 6 रन प्रति ओवर एक्स्ट्रास के अंदर आ रहे हैं और इसी हिसाब से 120 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रास में आ जाएंगे। सिर्फ 50 रन बनाने होंगे बैट्समैन को। ऑब्वियसली वी नो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, लेकिन चौकन्ना रहना बहुत जरूरी। 9 रन ऑलरेडी आ चुके हैं रोहनगढ़ा के ओवर से। नाउ 2 गेंदें बची है। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कैन वी सी फ्रॉम रोहनगढ़ा? क्या कर सकते हैं ये? क्या इनके हाथों में कुछ चमत्कार है? ऑन टारगेट इस बार, इन दी एयर, 2 बॉलर, दो विकेट कीपर के, वेल 2 फील्डर सॉरी के बीच में जस्ट लैंड करती है। पंकज बहुत दूर से भाग के आए, लेकिन उनके और मुनीश के बीच में लैंड किया। ये हाफ अपॉर्चुनिटी, हाफ चांस जिसे कहते हैं। हमारे एक्साइटमेंट में विकेट कीपर का नाम निकल गया, बट ही कुड जस्ट बी अ स्पेक्टेटर, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन फील्डर्स दोनों चौकन्ने, हाफ चांस में भी। और इस बार कट और एक बहुत बड़ा शाउट और इसी के साथ पहला विकेट। तो फाइनल बॉल, अपने ओवर के फाइनल बॉल पे रोहनगढ़ा ने कुछ कर बैठे हैं जो बहुत ही काम की उपाय है। और 17 for 1 is the score at the end of 2 overs. Now, new bowler in the attack. Sidhu has been brought back in the attack actually and starts with a wide. एक्स्ट्रास की हमने बहुत चर्चा की पिछले ओवर में, और एक्स्ट्रास अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 12 एक्स्ट्रास हो चुके हैं तीसरे ओवर में। हम सिद्धू इन द अटैक, इस बार वाइड, एक और इशारा तो नहीं लग रहा। इस बार अंपायर हैप्पी विद इट। एंड वेल, अपील तो होगी जरूर, लेकिन अंपायर इज नॉट गोइंग टू गिव अ विकेट देयर। 18 for 1 the score still. 28 extras were given in the first innings, almost 30 runs through extras. 1/3 of that already ho chuka hai. We are still in the power play. We're in the third over right now. Third over of the power play as well. राम अभी भी टिके हैं। डॉक्टर प्रदीप की विकेट
हो चुके हैं डॉक्टर प्रदीप. Well, important wicket. Sidhu in the attack. Good ball. Or it's bar. Shout out. Finger goes up. Finger goes up. Well, he is not happy. Ram thinks that he's got the bat first. Or lekin umpire is happy with that. Or finger has gone up. Ram says bat first, but the umpire disagrees. And with that, the second wicket has been given. DRS not available. Ram disappointed with that. He's not happy. But दूसरी विकेट गिर चुके 18 for 2 now. Similar position for the mid-age warriors than it was for the mid-life Avengers. So, we continue once again. बहुत ही बढ़िया विकेट रही सिद्धू ने जो ली हमारे जस्ट सामने. थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता था लेकिन अंपायर डिसीजन इज फाइनल. दैट इज हाउ वी रोल हियर. 18 for 2 is the score. करंट रन रेट 11 से डिप होके 7.2 पे आ चुका है और रिक्वायर्ड रन रेट. एंड एक और शाउट लेकिन लेग साइड से डाउन जाते हुए क्लियरली मिसिंग द स्टैम्प्स. So, final ball of the second over of Sidhu's spell. 3 overs in total. 18 for 2 is the score. We're still in the power play. Umpires match एक बार थमाते हुए. Once again, and that's hit well into the gap. और यहाँ पे 4 रन आएंगे. Much needed boundary for the mid-age warriors. और इसी के साथ 22 for 2 at the end of 3 overs. बहुत ही बढ़िया boundary.
Now, once again in the attack. This time, I think wide ball. Wide is the indication. Rohan Gada once again. Is bar the chance there maybe to grab something? Half a chance. That was a chance for Danish, I think, in the deep. Once again, Rohan Gada in the attack. Abhi in the air. Can someone get underneath it? Who's saying mine? Nobody. And just a confusion in the end. Nobody even goes for that. Nobody shouts. Nobody's claiming mine. And just a let off once again. Once again in the attack, and that's it brilliantly towards the leg side. Gonna get them 4 more runs. This is exactly what happens when you let the possibility of a catch go. That was a huge chance for Rohan Gada to claim his wicket. Two fielders coming close and nobody being able to seize that. And the very next ball hit away for 4. Now, well played. Gonna be a single. And back to the wicket keeper. Just needs to cover that off. Once again, now that's really well hit. And the fielder at cover just making sure it doesn't bypass him. There's no cover behind him, so no deep cover. And that was really important. Really good fielding by him in the end. Rohan Gada now on the attack once again. And a swing and a miss this time. A good ball. So really good return in the end after that 4 for Rohan Gada. And that brings about the end of his over. It's 29 for 2 at the end of 4 overs. Now, once again, they choose to get a new bowler in the attack. Danish this time. Danish, the hero for them who got those 50 runs. Very, very important runs. Can he replicate something with the ball as well? Is he going to bowl 4 overs? That's the first question. And that depends on the start he has here. The 5th over of the power play. Danish ko mil gayi hai responsibility. Danish. Unique angle of delivery in the gap there. Pankaj cover करते हुए और good fielding by Pankaj in the deep. 3 रन बचाए हैं. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पंकज की.
अवेयरनेस कि वहां पे शायद रोहन गड़ा नहीं पहुंच पाए, बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग टू कवर दैट एंगल, और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। दानिश इन द अटैक, गुड बॉल पर वाइड का इशारा, इस बार एक और एक्स्ट्रा। 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं एक्स्ट्राज में, 28 रन एक्स्ट्राज पहले इनिंग्स में, 14, 4 ओवर में ऑलरेडी 14। इस हिसाब से 40 to 50 रन सिर्फ एक्स्ट्राज में आएंगे, और ये बहुत ही बढ़िया काटेसी के साथ 4 रन, लेट काट गैप फाइंड किया है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। रियली गुड क्रिकेटिंग शॉट बाय अश्विन तिड़के। 4 runs added to the board, 35 on the board now. Back to Danish now. 3 balls already in his over so far. 6 runs off it. 1 single, 1 4 and 1 extra. The wide. He has to avoid extras. वो बहुत ही important है. Field change शायद थोड़ी. राहुल श्रॉफ को स्क्वायर पे खड़ा करवा दिया है. दानिश इस बार स्विंग एंड अ मिस. अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार. 4 बॉलें अप. और कुछ इंडिकेशन अंपायर से. अंपायर अच्छे मूड में लग रहे हैं, और उसी अच्छे मूड में उन्होंने कह दिया है नेक्स्ट बॉल, लेट्स कंटिन्यू. एंड बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, अपॉर्चुनिटी टू कैच देयर, और बहुत ही ब्रिलियंट कैच सिद्धू. कैच ऑलमोस्ट एक सेकंड के लिए ड्रॉप लग रहा था. पहली बात बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और उसके बाद शायद ड्रॉप हो सकता था, लेकिन 1 2 3 4 मौके जरूर लिए, लेकिन बढ़िया कैच. और इसी के साथ एक और विकेट ऑन द बोर्ड. दानिश को अपनी पहली विकेट भी मिलती है, और सिद्धू आई थिंक इट वाज द वन हु कॉट दैट इन द डीप. अश्विन की विकेट. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. 35 for 3 एंड द 5th ओवर इज अबाउट टू कम टू एन एंड. एक बॉल बचा है. And catches the call. And brilliant catch now. He's on a hat trick with that. What a brilliant catch in the deep. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे एक और विकेट हासिल कर दी है पहले ही बॉल पे. और ये मैच टर्निंग मोमेंट हो सकता है, बिकॉज अब 4 विकेटें जा चुकी है पावर प्ले में. और अक्षेश त्रिवेदी ब्रिलियंट विद द बॉल, और पहले ही बॉल पे डिसमिस हो चुके हैं. बहुत ही बढ़िया कैच. 2 विकेटें दानिश को. इसी के साथ दानिश का ओवर समाप्त होगा. ऑफ कोर्स ही इज ऑन अ हैट्रिक, बट ही विल हैव टू कम बैक फॉर अनदर ओवर टू ट्राई एंड क्लेम दैट हैट्रिक. स्कोर नाउ एट द एंड ऑफ 5 overs, 35 for 4.
Bounce just before the boundary line. पहले ही बॉल पे 4 रन नील धनकानी, न्यू बॉलर इन द अटैक, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट. समरेश 14 runs पर. He is the batter that has already set his ground. अब हिरेन जडेजा ऑन द अदर एंड यहाँ पे अच्छा कट, दोनों फील्डर को बीट करता हुआ 4 और रन आएंगे. विकेट कीपर वेरी क्लोज येट सो फार. इन द एंड डज इट इवन मैटर? 43 रन्स पूरे हो चुके हैं. 43 for 4, दो बहुत ही अच्छे चौके, और इसी के साथ 43 ऑन द बोर्ड. 128 नीडेड इन 88 बॉल्स. करंट रन रेट 8, रिक्वायर्ड रन रेट 8.73. विकेट भी इंपॉर्टेंट है. हिरेन जडेजा ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड नाउ. बहुत अच्छी बॉल इस बार, लो रखी, पेस ऑफ, एंड नील धनकानी दिस बार सिंगल. पेस ऑफ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपील, लेकिन अंपायर, बहुत ही बड़ी अपील, अंपायर नॉट कन्विंस्ड एट ऑल. प्ले ऑन कह रहे हैं, लेग अंपायर भी नो रिएक्शन. So, बहुत क्लोज था, but not out in the end. इस बार another swing and a miss, and dot balls, very very good. बहुत अच्छा ओवर प्रदर्शित हो रहा है. 2 चौके, पहला बॉल चौका और फिर एक अनलकी चौका, पर उसके बाद 3 बहुत ही अच्छी गेंदें. नील धनकानी की फाइनल बॉल, इसके साथ स्ट्राइक कर दिया है, और फील्डर पंकज कवर जरूर करेंगे. एक सिंगल ही आएगा, और जस्ट 1 रन टू एंड द ओवर देयर. 9 फ्रॉम इट, 44 for 4 at the end of 6 overs. और इसी के साथ दानिश की वापसी हो चुकी है. एंड रिमेंबर, दानिश इज ऑन अ हैट्रिक. दानिश, कैन ही क्लेम दैट हैट्रिक? दैट इज द क्वेश्चन. इज ही थिंकिंग अबाउट दैट हैट्रिक? फाइनल फील्डिंग एडजस्ट करते हुए दानिश, 2 विकेट फाइनल 2 बॉल में. दानिश ऑन अ हैट्रिक. Now, Danish in the attack. Slight pause लेते हुए, maybe just some final adjustment in the field. And that will be a wide ball. Well, Danish starting with a wide. Technically, still on a hat trick. दानिश नाउ इन द अटैक. इस बार अच्छी बॉल, फील्डर वहां पे मौजूद, और डॉट बॉल. तो हैट्रिक बॉल समाप्त होती है, लेकिन दानिश अच्छी बॉलिंग जरूर कंटिन्यू करेंगे. दूसरा ओवर है उनका, इसके बाद 2 और ओवर आएंगे जरूर. कब आएंगे वो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिलहाल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है दानिश ने. पहले ओवर में 6 रन दिए, ये ओवर में 1 रन, अभी वो भी एक्स्ट्रा था, और ये घुमा दिया. बहुत ही बढ़िया कॉन्टैक्ट, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट. ह्यूज मैक्सिमम, मच नीडेड मैक्सिमम, 6 आउट ऑफ द पार्क. और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं
Mid-age Warriors के 51 on the board. 51 on the board now. Danish in the attack. What is going to be his response? और इस बार बहुत ही अच्छा कॉल और रन आउट इसी के साथ LBW. वेल ये चांस था और इसी के साथ बहुत ही अच्छी बॉल दानिश की और वेल अंपायर ने फिंगर अप कर दिया है. ही थिंक्स इट वाज नॉट गोइंग डाउन द लेग साइड एंड इसी के साथ पांचवी विकेट अब गिर चुकी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट. और इसी के साथ समरेश आउट ऑन 25 रन जस्ट आफ्टर दैट 6. अच्छा प्रदर्शन लेकिन विकेट खो चुके हैं अब. And now we continue once again after that small break. दानिश एक और क्रिटिकल विकेट लेते हुए तीसरी विकेट उनके स्पेल की सिर्फ दूसरे ओवर में. दानिश ट्रू MVP फैशन. He's taken a very crucial wicket earlier, which was of course it was the man in form with the ball, Mr. Trivedi. And now he's taken another one, two in the previous over, one in this one, three more balls to go in this over. 51 for 5 is the score. Danish is dragging his team back into the attack now. This time another good ball, but it's hit in the gap. Rahul Shroff covering it off. Good fielding. 120 needed now, 80 balls. So the gap of 40 balls is very crucial. Usually in T20 cricket, it's said that if you have a gap of around 40 balls, it's usually running in your favor. That is when, a lot of things can possibly go your way. We'll see how true that lives out to be in this game. But now, Danish in the attack. Good touch there. The fielder there just covering up. Really, really good teamwork there from both of them. एंड एक और रन आएगा यहाँ पे. फील्डर वो कामली बॉल कलेक्ट करते हुए और इसी के साथ ओवर कम्स टू एन एंड एंड द स्कोर नाउ 53 for 5 is the score now at the end of 7 overs. 3 overs to go before the drinks break, of course, at the 10 over mark. And remember, very important to remember that the bowling side, which of course is your midlife Avengers, they were at 66 for 4 at the end of 10 overs. So, can be ahead at the break, at the half time, at the halfway part of the second inning, sorry. Middle-aged Warriors can be ahead now. Rahul Shroff, first over in the attack. Very good with the bat. Can he be good with the ball? 53 for 5.
अच्छा शॉट इस पर. ईशान खान एंड हिरेन जडेजा एट द क्रीज नाउ. बहुत ने बहुत बहुत दोनों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया. और ओ वहां पे एक शाउट बट मिसिंग लेग. वी नो, we can see that it's missing leg and the umpire can see much more than us. लेकिन as we were saying, दोनों ही करंट बैटर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बॉल के साथ. दोनों ने विकेट ली थी. हिरेन जडेजा even more so. Can both of them produce something from the bat as well for the team? Good cut once again. Single की ask लेकिन no response from हिरेन. और इस बार confusion. रन आउट में विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे दोनों. थोड़ी अवेयरनेस और जरूरत जरूर है. Rahul Shroff once again. और इस बार इन द एयर अबाउट द फील्डर. 4 रन आएंगे वहां पे. रोलिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री. बहुत ही बढ़िया शॉट. ब्रिलियंट शॉट देयर बाय ईशान खान. 4 रन और आएंगे. Just finally adjusting the fielding once more. और ये अच्छा शॉट कवर की तरफ लेकिन फील्डर तैनात. फील्डर अवेयर और बहुत ही अच्छी फील्डिंग. स्विफ्ट फील्डिंग. यहाँ पे 1 रन प्रिवेंट किया है. इसी के साथ ओवर कम्स टू एन एंड. जस्ट 5 रन सॉरी फ्रॉम दिस ओवर. 58 for 5 at the end of 8 overs. And अभी मुनीश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ओवर की. मुनीश वेरी वेरी गुड विद द स्ट्राइक रेट. बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट था मुनीश का पहले इनिंग्स में. अगर आपको याद रहेगा 23 रन इन जस्ट 10 बॉल्स. 230 का स्ट्राइक रेट. हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ द डे. Munish, of course, was the second highest scorer for his team. Is bar. What is this approach going to be? Fast or spin? Munish in the attack now. And well, that's going to be a wide. Starts with a wide, and now it's running all the way behind. Can someone cover that? Can someone stop that? I think just in the end. So it's going to be wide and an extra from the single they've taken. और बहुत ही अच्छा शॉट ओवर एंड अबव ऑल द फील्डर्स. दैट इज गोना बी अ मैक्सिमम. बहुत ही बढ़िया शॉट था वो. सीधा 6 के लिए. And now once more down the line is बार एक और 6. Back-to-back sixes. This is the over that they were looking for. This is the over where they might just recover some of those runs. और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन ईशान का. 1 4 पहले और अभी 2 बहुत ही बढ़िया छक्के.
काफी रन रिकवर कर लिए अब 99 नीडेड फ्रॉम 69 बॉल्स 30 बॉल्स का गैप हो चुका है 40 बॉल से क्या ये वो एक्सपेंसिव ओवर होगा और इस बार वाइड वंस अगेन एंड एक सिंगल भी आएगा तो वाइड एंड अ सिंगल 74 for 5 is the score now. Ninth over going on. Munish 16 run दे चुके हैं already. This is the kind of over that can change the entire landscape of the match for both the sides. And एक बार again बार spin होते हुए 4 runs और आएंगे वहां पे 20 रन इस ओवर में और वाइड स्पिन हो रहा था बहुत ही महंगा ओवर 4 बॉल हुए हैं 20 रन ऑलरेडी एंड वहां पे एक अपील फिंगर डज नॉट गो अप ही सेइंग इट गोज आउट ऑफ द लेग साइड लेकिन फाइनली एक अच्छी गेंद replay there missing the stumps final ball of the over अच्छी गेंद एक और बारी और इसी के साथ ओवर समाप्त अगले ओवर के बाद ड्रिंक्स होंगे 9 overs up 78 for 5 93 needed in 66 now 20 runs from that over राहुल श्रॉफ को फिर से अटैक में लाया गया है राहुल श्रॉफ and Danish really good so far and they need more of these people to perform and well continuously get wickets or restrict runs एक और बारी सिर्फ सिंगल ही आएगा यहाँ पे let's look at the over chart so far 2 overs so far by Sidhu 12 runs of it very good Rohan Gada first over very expensive second over good and now in the gap maybe but that was close Danish 2 overs 15 runs Neil Dhankani 1 over 9 runs and Rahul Shroff now 1.27 runs so far Munish the only one who has been fairly expensive and now once again single बहुत ही बढ़िया bowling Rahul Shroff की only singles and once again really good ball almost catching the batter off guard there बहुत ही अच्छी गेंद राहुल श्रॉफ की सिर्फ 2 रन इस ओवर में 2 बॉलें बची हुई एक और अच्छी बॉल बहुत ही अच्छी बॉल राहुल श्रॉफ की they need more of this from Rahul from Danish and a few others but the batting side covered some good runs in the previous over so they don't need unnecessary risks here and इसी के साथ 10th over comes to an end just 2 runs off it 80 for 5 at the end of 10 overs and now it's time for drinks break
So we reset the ends, and now bowling from the other end. They've trusted Munish once again with the ball. Interesting approach because we saw Munish go for 20 runs earlier, especially when he was bowling to Ishan Khan, who's at the non-striker's end now. And a change in wicketkeeper. Tahilyani is now going to be the wicketkeeper. Devesh Tahilyani, who went for 2 runs, was a little frustrated with his own performance in the first innings. Can he do something at the back end now? For 5 now. Munish starts with a good ball this time and asks for a wide there from the batter, but no dice from the umpire. So we continue once again. Munish on the attack, looking for redemption. And this time a swing and a miss. A shout there, but not really an opportunity that disturbed the umpire, did it? Good stumping, good reaction from the wicketkeeper. Little trigger happy, I would say, but that's okay sometimes. You know, at least your reactions are fresh and fast. That's what's important. So, Hiren Jadeja on strike, facing Munish, looking to cut once again. Good bowling by Munish, really good bowling now. And you can see Ishan Khan just itching at the non-striker's end because he knows he wants to get on strike, and we've seen what he's done to Munish in the previous over. But this time there's a different batter on the crease and he has a different approach. Maybe not this time. Smashed it down the leg. He knows the answer, and Munish, the moment you get your length a little bit wrong, it's just going to be put away for 4. So 4 more runs now on the tally. Now, Munish in the attack again. This time tried to cut it, and did he get a bat on it? That's the question. The wicket-keeper and bowler seemed to believe that he didn't get a bat on it. It was just pad and maybe an LBW, but the umpire's happy with that, so we continue. Once again, Munish, final ball of the over. Been a very good over so far, except for the 4, and now just as we say that, well, there's about just a chance maybe. There was a fielder there, and we thought for a second maybe he would just come and grab that, but just bounced before him, bounced in no man's land, and just a single. And now straight down the line, that's going to be 4 this time. Looks to be, can the fielder get there in time? And maybe he has. Has he? That's the question. And the answer is yes. Good connection there. Really good connection. That's going to give them 4 runs. Finally, the boundary that they were looking for. Good bowling this time. Rahul Shroff in the attack, of course. Back at it. 3rd over for him. First boundary that he's conceded. He's been really effective tonight with the bat and the ball. Only thing missing is probably a wicket for Rahul Shroff.
This time, just slightly played and another dot ball. So, response in kind, 91 for 5 so far. This is the 12th over, of course. They need another 80 runs. The gap is of around 30 balls. At one point, it was 45, and well, you do have expensive overs in the middle of the park sometimes. That's bound to happen, but Rahul Shroff is making up for that really brilliantly. 2 balls to go for the third over to end for Rahul Shroff. I'm sure they probably have Danish in mind sometime around now, and there it is. He gets his wicket. The important man, Ishan Khan, is dismissed for 23. A really good innings shaping up, a good partnership between the both of them. But that comes to an end. Ishan Khan has to walk back to the dugout, and now it's 91 for 6. Rahul Shroff strikes with venom. So now Ganesh More, the new batter on the crease with Hiren Jadeja, who's up to 12. 91 on the board, and I think now we need someone to take some kind of stand like Danish did. Those 50 runs really crucial. That solo partnership that he built with multiple people, the solo man standing till the end. He was retired, hurt. If you remember, he didn't get dismissed. Last ball of the over for Rahul Shroff. और ये घुमा दिया है एक बार, लेकिन डॉट बॉल होगा सिर्फ. 91 for 6 at the end of 12 overs. 80 runs needed in 48 balls. .91 for 6 now. Pankaj, the new bowler on the attack. Remember, he added around 20 runs as well. Ganesh More slightly under pressure. So the current run rate 7.44, required run rate just moving up now steadily towards 10, 10 and a half and over. And this is where the match might turn once again in the favor of the bowling side. And well, was that a hit wicket? For a moment,
It looked like he got something on the wicket, but the bails didn't fall. Well, that was interesting. Maybe we were just seeing things, but it looked for a moment that he got something on the wicket. And well, as long as the bails don't fall, you're safe. And he's safe here. इस बार बहुत अच्छा घुमा दिया है, गैप में 4 रन आएंगे. बहुत ही बढ़िया शॉट गणेश मोरे का. एंड यही कोशिश कर रहे थे कंटिन्यूसली. दे वर रीडिंग द बॉल और समझे कि गैप कहाँ है. और वेल, नो फाइन लेग means 4 runs right there. So 97 now. Again घुमाने की कोशिश. इस बार contact not really heavy. Single run आएगा. 98 on the board now. 2 runs away from 100 mark. 100 mark will be very crucial. उसके बाद 70 run और ज़रूरत है. Someone has to accelerate. Someone needs a couple of those 20 run overs or at least one of them. और ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे 2 फील्डर कंबाइन करते हुए. सिंगल. अच्छा ओवर पंकज का सो फार. एक 4 जरूर आया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियली गुड ओवर फ्रॉम पंकज. फाइनल बॉल ऑफ द ओवर फ्रॉम पंकज नाउ. और इस बार अगेन घुमा दिया है, लेकिन सत्या इन द डीप. गुड थ्रो. और यहाँ पे क्या विकेट हासिल हुई है. रन आउट की मांग है जरूरी, लेकिन आई थिंक हिरेन जडेजा क्रीज में पहुंच गए थे. थ्रो शायद थोड़ा फास्ट हो सकता था. विकेट कीपर शायद थोड़े फास्ट रिएक्ट कर सकते थे. शायद शायद शायद. काश काश काश. बट नॉट आउट इज द सिग्नल फ्रॉम द अंपायर एंड वी कंटिन्यू. So 100 comes up now for the mid-age Warriors. 100 for 6 in 13 overs. 7 overs to go, 42 balls, 71 runs needed. और इस बार बहुत ही अच्छा डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी. और इसी के साथ वेल, बैट्समैन थोड़े कंफ्यूज्ड. वो इंक्वायर कर रहे हैं. ही इज नॉट कन्विंस, बट राहुल श्रॉफ इन द अटैक वंस अगेन. और आप देख सकते हैं राहुल श्रॉफ इन द अटैक. बहुत ही बढ़िया बॉल और ये अंदर आती हुई. अंपायर की फिंगर अप and the batter not convinced, but he has to go. And इसी के साथ गणेश मोरे dismissed. So Siddharth now at the crease, 100 for 7. and अब काफी problematic scenario बन रहा है मिड एज वॉरियर्स के लिए. सो राहुल श्रॉफ फाइनल ओवर हियर. 2 विकेटें अब ले चुके हैं. बहुत ही इफेक्टिव बॉलिंग, सिर्फ 11 रन दिए हैं. मैच जिताने वाली बॉलिंग की है. और इसी के साथ एक और क्लेम और सिद्धार्थ का निक लगते हुए 100 for 8 नाउ. एक और विकेट गिरते हुए एंड राहुल श्रॉफ नाउ ऑन अ हैट्रिक. राहुल श्रॉफ अब हैट्रिक पे. और हम कह ही रहे थे कि मैच जिताने वाली बॉलिंग की है
और इसी के साथ एक और विकेट पहले ही बॉल पर सिद्धार्थ निक करते हुए विकेट कीपर के हाथ में आवाज आई जरूर। और बहुत ही बढ़िया कैच। इसी के साथ 100 फॉर 7, 100 फॉर 8 सॉरी इन 13.2 और 4 गेंदें बची है और राहुल श्रॉफ हैट्रिक पर। So we are back in the attack. Rahul Shroff 4 और गेंदे पर ये ऑन हैट्रिक। Brilliant ball by Rahul Shroff, but well defended by Shravan Kashyap. राहुल श्रॉफ हैट्रिक पर थे, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है। दानिश भी हैट्रिक पर रह चुके हैं ये इनिंग्स में, बट नोबडी वाज एबल टू क्लेम दैट हैट्रिक। और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया टर्न। 4 बॉलें आप, 4 गेंदे आप राहुल के इस फाइनल ओवर में 11 रन दिए हैं, 3 फॉर ले चुके हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्रदर्शन। Danish still favorite for man of the match, but Rahul Shroff is a very good second for the prospective man of the match today. और ये अच्छा घुमा दिया है गैप में, hit towards the fielder covering up there, single आएगा. And that brings Hiren on strike, who has just been seeing a few batters just collapse in front of him. He's seen 4 batters, I think, just come and go while he's been at the crease. 14 from 14. He's not played a lot. He's playing now with Shravan. He played with Siddharth. He played with Ganesh Murray, and he played with Ishan as well. This is the 4th partner at the crease for Hiren Jadeja. I think maybe wider ball, but nothing doing for the umpire. He's happy with that. हिरेन थोड़े शॉक जरूर लग रहे हैं, but इसी के साथ 14th over comes to an end. The 4 overs ending the spell of Rahul Shroff. 12 runs from it, just an economy of 3 and a 3-4 as well. 101 for 8 at the end of 14 overs. 70 runs needed now in the last 36 balls. 6 overs, 70 needed, close to 12 and over. Really need 2 really huge overs, and Hiren Jadeja might be the last man standing. No ball ka indication. Pankaj Asrani, the new bowler once again. Second over for him. No ball का साइन अब जा चुका है, इसी के साथ फ्री हिट नाउ. घुमा दिया है फ्री हिट पर, लेकिन कनेक्शन नॉट द बेस्ट. सो फ्री हिट पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए पंकज जी. थोड़े दुविधा में जरूर लग रहे हैं हिरेन जडेजा. नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे देखते हुए, और यहाँ पे बॉल स्लाइटली शॉर्ट. सिंगल लेंगे श्रवण और हिरेन जडेजा विल कम ऑन स्ट्राइक. ही हैज टू हॉक द स्ट्राइक एज मच एज ही कैन नाउ. सब उम्मीदें उन पर ही कायम है और प्रेशर भी उन पर है. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की हिरेन जडेजा ने. क्या बैटिंग से अपने टीम को घर ले जा सकते हैं. 40 रन और सिर्फ हिरेन से लगेंगे. 70 इन टोटल. चाहे कोई पार्टनरशिप भी अगर बिल्ड करे तो 40 से 50 रन तो सिर्फ हिरेन से आने ही होंगे. और बॉल्स बहुत कम, गेंदे बहुत कम.
सिक्सेस की ज़रूरत, एक्स्ट्रास की भी ज़रूरत, और एक्स्ट्रास यहाँ थोड़े से नसीब ज़रूर होते हुए। पहले बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रास थे, 22 एक्स्ट्रास फॉर नाउ। एंड नाउ बहुत ही बढ़िया शॉट है इनका, 4 रन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट शॉट। एक और बार पंकज इन द अटैक, और ये स्ट्रेट डाउन द मिडल। पंकज ट्राइड टू कैच इट, बहुत मुश्किल था, गॉट समथिंग ऑन इट। मे बी अपने आप को इंजर भी कर चुके हैं, मेडिकल टीम को बुलावा जरूर आया है। पंकज हैज इंजर्ड हिमसेल्फ मे बी। ऑफ कोर्स बहुत ही जोरदार शॉट था वो। मेडिकल टीम, और यहाँ पे पंकज हर्ट फॉर नाउ, तो उनकी आखिरी बॉल मुनीश डालेंगे, और मुनीश को मार दिया है बहुत ही बड़े सिक्स के लिए, मे बी, बट नहीं। बाउंड्री पर फील्डर ग्रैब करते हुए लगा कि सिक्स आएगा जरूर, लेकिन फील्डर बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए वहां पे, और इसी के साथ श्रवण कश्यप डिसमिस्ड। So Rohan Gada now on the attack. Single आएगा यहाँ पे. The opportunity may be to finish the game. लेकिन missed there. Keeper tried to grab that one, लेकिन didn't get the right connection and just lost the ball in the end. 110
on the board now. Arav and Hiren Jadeja now. Arav, the final man going out there, the young gun of tomorrow. And Hiren Jadeja, what can he do now? So, final wicket now. And Rohan Gada, the match seems to be really difficult now. Kind of out of hand. There is still a possibility if Hiren Jadeja can play it till the end and maybe chase this huge total that he needs 61 runs in 28 balls, close to 13 runs and over. It's possible. Unlikely, yes, but possible. But also, the threat looms for the mid-age Warriors where just one wicket, even Arav's wicket, even a run out, anything could just end the match right here. And that is what the bowling side, I'm sure, is going to be looking at. That is exactly what mid-life Avengers want. One more wicket so they can bring this to an end. Rohan Gada now given the responsibility. And remember, Danish has yet to bowl overs. He has 2 overs still to go. Sidhu has bowled 2 overs as well. Danish has bowled 2 overs. That's it. So there's a lot of players who can just get that wicket easily when required. 61 needed of 28 balls now. Helmet set up for Arav. Rohan Gada in the attack. Just a swing and a miss for Arav. I think he's been told to just hold his line and defend wherever required because his main aim right now should be to try and get Hiren Jadeja on strike. Arav on strike. क्या आरव एक अच्छा डिफेंसिव शॉट कोशिश जरूर करते हुए एक सिंगल की गुंजाइश आरव को टू ब्रिंग हिरेन ऑन स्ट्राइक. Arav field study करते हुए just to figure out where is the best area for him to just put it away, maybe at least for a single, if not for a 4, to get Hiren on strike. But 15.4 already in this over. Rohan Gada in the attack. अच्छा शॉट लेकिन फील्डर महजूद. 15.5. अब ये आखिरी बॉल है ओवर की. आई थिंक हिरेन विल हैव अ वर्ड विथ हिम. And now, overdone. No real runs from it. And now, 61 needed of 24 balls. Hiren Jadeja on strike. Danish in the attack. Swing and a miss. Danish अब अपना तीसरा ओवर डालते हुए. एक और ओवर है इसके बाद. लेकिन this is the danger bowler. 3 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं दानिश.
And now facing the final batsman. और बहुत अच्छा घुमा दिया लेकिन फील्डर वहां मौजूद. सिंगल आएगा और वहां पे no to a single. Because I don't think he wants to put Arav on strike in this position. Will be a tough ball to face, and maybe Hiren knows that he has to take the responsibility to go at this alone. Maybe find the boundaries himself. And now इस बार अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन हिरेन का. 4 रन आएंगे जरूर वहां पे. Hiren needs a lot more of these if he wants to chase this total down, but that's a good start. That's a good way to start. If you're smacking those for 4, when Danish is bowling, there's a lot of confidence you gain from that. Into the gap once again, brilliantly hit by Hiren, or 4 run or. Is there a light at the end of this tunnel? Is this a chance for the mid-age warriors? The back of Hiren, who's up to 28 now. So, the most expensive over of his spell so far for Danish. Went for a few 4s already. और ये फिर से घुमा दिया है, लेकिन इस बार वहां पे राहुल श्रॉफ is present. And it's just going to be a single, I think. Arav now. 1 ball to face for him. एक single ले लिया हिरेन ने जानबूझ के to just give Arav a free shot maybe. But I think Arav will just want to defend this one and then get Hiren back on strike. Safer option, isn't it? Wide ball maybe, and this is a wide. So, another run added to the kitty. 51 runs needed now in 19 balls. Assuming that this will be a dot ball. Let's say 51 needed of the last 3 overs. Or a swing and a miss from Arav. And that's going to be that. So, that's going to be the end of the over. 120 at the end of 17 overs. 51 needed of the last 18 balls. It's all down to Hiren Jadeja. And while he's still at the crease, anything is possible. Now, the equation is clear. So now, the equation is clear. 51 of 18 balls. And wow, that's the start that the bowler wanted, didn't it? Rohan Gada, I think, the bowler. Just a little bit not visible right now, but yeah, it looks like it's Rohan Gada, given the responsibility of the 18th over. So the equation is clear. 51 needed of 3 overs. It's all hits, all or nothing on the back of Hiren Jadeja. And now full toss down the line. Fielders there. Not going to be good enough now. So, just a little bit upset with that. And Arav needs to get some form of connection now to bring Hiren back on strike. Our in-house young Suryavanshi.
And gets a good contact on it, Arav, this time. And that's going to be 4 runs, actually. Brilliantly hit. Smashed away for 4 runs. Brilliant, brilliant shot by the youngie here. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है आरिफ का. एक चौका. 46 needed in 15 now. Araf facing Pareen. Araf once again, this bar ball thodi si out wide, but still in, all good for the umpire. And Araf just not able to read that one. Once again at Arav, and now it's hit it hard. The fielder underneath it, can he grab that one? Just slightly short. So good shot by Arav. And that brings Hiren back on strike. Hit well now, and it's going to be a single, but singles are not enough for Hiren. Boundaries are needed. It's all or nothing. Boundaries are needed, and well, that's the end of the over here. It brings Hiren back on strike, but 44 needed of 12 balls now. Only boundaries will help now. Singles, not good enough. He has to go all out. If he loses his wicket, he loses it. That's it. But he has to take those risks now, Hiren. He looks a little tired. He's been there for a while. This is his 6th partner at the crease. So सिद्धू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 19th ओवर की. एक ओवर दानिश का भी बचा है, भूले मत. लेकिन सिद्धू इन द अटैक नाउ. हिरेन ट्राई टू टारगेट दैट वन. बॉल लो रह गई. बॉल लो रह गई उस मामले में. Once again, chance for Hiren. Or decent correction, and this bar, the stump blocking it for him. Wicket नहीं होगी, लेकिन 4 भी नहीं आएगा, जो शायद आ सकता था if it went straight down the line. You never know, maybe the fielder wouldn't have reached that. लेकिन stump ने ही ball रोक दी. When it's not your day, it's not your day, and sometimes it's just bad luck. But well, 44 now needed of 10. Hiren going to strike once again. Good strike there in the gap maybe. And that's going to get him 4 runs. Really well hit by Hiren. Brilliant, brilliant shot. Now Sidhu getting some instructions from the dugout. And this time hit in the gap. It's only going to be a single, I think. And Hiren takes that single surprisingly. So now 39 needed. And well, the match is almost done and dusted at this point, isn't it? Swung really well by Arav. Is going to get a single probably.
So Hiren on strike once again. He needs a single to face the next over, but he needs 2 runs here as well. And now he's gone for a big one. Good connection this time. 6 right there. So that takes him into the final over with 32 needed. I think Danish is going to be given the responsibility of the final over. And while 32 is an improbable task, it's not impossible. That's the only thing you can say. It's going to get Arav on strike. So he needs to rotate strike off the first ball itself, get one of that. And then even if he gets 5 sixes after that Hiren, it's going to take him to 30. So it's going to leave a gap of 1 run, which will result in a super over. That is the best case scenario. The best case scenario for them is a super over at this point. 1 run of the first ball, 5 sixes by Hiren gets them up to 31, which results in a super over. The odds of it happening very low, but still possible. Just 1 ball. And really good ball by Danish. And now the keeper just left it and just allowed Hiren to get back on strike. Well, that could have been the end of the match right there. And 5 sixes take it to a super over now. 42 runs on the board for Hiren of 33 balls. He has really played his socks off today. Added a lot of, and now asking for a wide. Maybe the ball running behind for 4, I think. Wide and a 4. Wide and a 4. Well, 5 runs gifted there from Danish now. So now, suddenly the equation is down to 26. They can win it. Hiren really needs to go all out. The match is in his hands. And this will be quite a spectacular finish. If we see Hiren chase this down. 26 needed in 5 balls now. Needs a few sixes. And now once again a wide ball. So, Danish under pressure. 25 runs. Danish looks to be under pressure there. A position where only 6s were needed, and now suddenly it's inching towards Hiren's favorite spot, and he's hit it in the air. Now it's not going to go all the way. 2 fielders converging there. They need to come back for 2, but they don't. And now is that the end? Is that the end? That was a really good ball, and now putting Arav under duress to face the rest of the balls here. Arav swings it well, and the fielder there drops it there. So, couldn't grab that. And well, that should be that. So, regardless of what happens in the last 3 balls, unless there are extras, this is the game 1, you can say, for the Avengers. On target once again, looking to hit in the gap. It's only no runs there, and he's sending Arav back. Maybe they could have gotten a 2 there, I think. But 2 balls left now. And well, that's it. You can say that deservingly so, the midlife Avengers have seized the game off the brilliant performance from Danish with the ball as well as with the bat. Full toss hit for 4 now, but it will not matter in the end. 47 up for Hiren. He can get his 50 if he wants. That is still in his grasp, but apart from that, they can't chase this total down. 19 runs needed now of 1 ball. And a really, really brilliant performance. 150 comes up for the middle-aged Warriors as well. So those extras in the end just, pinching them a little. 28 extras given by them. 31 extras by this team. So can't really add to that. And now the final ball there goes for a single. No, he does not. Did it run for 4? No indication. So that is going to be that. 47 by Hiren. A brilliant, lonesome performance. But in the end, the victors are the midlife Avengers, who've won the match by 18 runs. Brilliant performance from the bat and the ball. Really, really good contributions you can see from, of course, Pankaj as well.
Rahul Shroff, Bankim Gogri, and importantly from Munish, 23 of 10 balls, the 230 strike rate, and most importantly, Danish 50 from 37, 7 fours, 1 6. And then on the other hand, you can see brilliant bowling figures as well from Danish, from Rahul Shroff, and from a lot others as well. Ultimately, that is it. The deserving winners are right in front of us, and that is it for today's game. The Midlife Avengers have seized victory and they have won. Thank you and hope you enjoyed the game.